Good morning students, as we are discussing the chapter 2nd of macroeconomics. So in earlier video we talk about the concept of investment, means what it mean and what are the type of investment. So we have talked about the fixed investment, inventory investment. So today we will talk about the difference between gross and net investment. Okay. So what is gross and net investment? First we will talk about gross investment. So what is gross investment? Gross investment, it is the total expenditure on the purchase of new assets by the producer and also expenditure on the replacement of the existing capital stock. So what it means expenditure on purchase of new assets. New assets means if a producer is purchasing new machinery, new building, plant, okay. So expenditure on that is included, okay. Then second we also include replacement expenditure, or we can say replacement investment or replacement cost, okay. So what it means, replacement cost means if machinery is outdated, okay, then the producer have to change or replace that technology, particular technology, okay. So that cost is included in gross investment, okay. Or we can say that regular use of machinery there can be some wear and tear, means उसमें कोई टूट फूट भी हो सकती है. So उसको रिपेयर करवाने का जो एक्सपेंडिचर होता है that is also included in replacement cost, okay. So gross investment is equal to expenditure on the purchase of new fixed assets and expenditure on replacement of the machinery, plant, etc. Okay. So that is equal to gross investment. Now we have net investment. So net investment is equal to, it is the total expenditure on the purchase of new fixed assets, okay. So net investment is the total expenditure, or we can say expenditure by a producer on the purchase of new fixed assets, okay. So total expenditure on the purchase of new fixed assets, okay. So replacement cost is not included in this. So net investment is also called as net addition to the existing capital stock. कि जितना कैपिटल स्टॉक प्रोड्यूसर के पास था, कैपिटल स्टॉक वी मींस द स्टॉक ऑफ मशीनरी, स्टॉक ऑफ बिल्डिंग, प्लांट एक्सेट्रा, ओके. जो फिक्स्ड एसेट्स हमारे फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. व्हाट आर द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? यस, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर प्लांट, machinery, okay. So expenditure on these, okay, means the producer is purchasing new machinery, new plant, so that is the addition to the existing stock कि already जो producer के पास जितना stock था उसमें जो उसने purchase करके new machinery को, plant को purchase करके जो उसमें add हुआ है, that is net investment, okay. So net investment is equal to total expenditure or expenditure by the producer on the purchase of new fixed assets is included, okay. So this is the meaning of gross investment and fixed investment, okay. So we can say gross investment is equal to expenditure
on purchase of new fixed assets plus replacement investment. Okay, but here replacement investment is in minus. Okay, we exclude the replacement investment. नेट इन्वेस्टमेंट में हम क्या है, जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है. सो वी हैव नेट इन्वेस्टमेंट कि नेट कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, मीन्स जो प्रोड्यूसर है उसके पास जो कैपिटल स्टॉक है फिक्स्ड एसेट्स का, उसमें कितना एडिशन हुआ है, कितना ऐड हुआ है. ओके, now we will talk about the difference between gross and net investment. So gross investment, it include expenditure on the new assets as well as expenditure on existing assets. कि जो हमारी ग्रोस इन्वेस्टमेंट है उसमें हम जो फिक्स्ड एसेट्स है उसमें एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड करते हैं and also on the existing assets. So what it mean, expenditure on the existing assets means regular use of technology. There is replacement cost, or we can say wear and tear cost. Okay, so due to wear and tear there is cost on the fixed assets. कि मशीनरी में कोई टूट फूट हो जाती है, ओके, या टेक्निकल डिफॉल्ट हो जाता है, तो उसको जो ठीक करवाने में जो एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन एग्जिस्टिंग एसेट्स. ओके, सो बोथ आर इंक्लूडेड इन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. देन वी हैव नेट इन्वेस्टमेंट. सो इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स. Expenditure on the purchase of new assets. Then we have, it include replacement cost. It include replacement cost means that is also called depreciation. Okay, that same thing कि जो fixed assets है उनको ठीक करवाने में या फिर जो टेक्नोलॉजी है प्रोड्यूसर यूजिंग दैट इज आउटडेटेड मीन्स वो पुरानी हो गई है, and the producer how to replace that particular technology. So expenditure on that is included in replacement cost. So gross investment include replacement cost, but net investment does not include replacement cost. Then third we have, it does not show net addition to the existing capital stock. ग्रोस इन्वेस्टमेंट से हमें ये नहीं पता चलता है कि इसमें हमारा ऐड क्या हुआ है. डज नॉट शो नेट एडिशन मीन्स नेट एडिशन. व्हाट इज द नेट एडिशन? कि वट एवर प्रोड्यूसर, फॉर एग्जाम्पल ए प्रोड्यूसर हैविंग 8 machines. ओके, सो बाय ग्रोस इन्वेस्टमेंट वी डोंट नो दैट व्हाट इज द नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग. कि उसके पास 8 थी, ठीक है, उनपे भी जो एक्सपेंडिचर आया है प्रोड्यूसर का वो भी हम उसपे इंक्लूड कर रहे हैं. मीन्स इनकी जो टूट फूट हो गई या टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी मशीनरी प्रोड्यूसर को रिप्लेस करना पड़ा, तो उनपे जो एक्सपेंडिचर आया दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन ग्रोस इन्वेस्टमेंट. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑन न्यू एसेट्स. तो दोनों का एक्सपेंडिचर इंक्लूड है. इट मीन्स वी डोंट नो एग्जैक्टली दैट व्हाट इज द नेट एडिशन, कि उसमें नेट कितना ऐड हुआ है, उसका जो कैपिटल स्टॉक है वो कितना बड़ा है. बट नेट इन्वेस्टमेंट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक. जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो हमें एग्जैक्टली बता रहा है कि उसमें कितना ऐड हो रहा है. मीन्स ए प्रोड्यूसर इज हैविंग 8 machine बट नाउ ही इज परचेजिंग 2 more machine. It means there is net addition of 2 machines because net investment only include the expenditure on the purchase of new assets. Is it clear? So this is about the gross investment and net investment. Okay. Then we have depreciation, or we can say include replacement cost. So what is depreciation? Depreciation. What is depreciation? So depreciation is equal to expenditure on existing capital due to
outdated technology. Outdated technology. Second reason can be regular यूज ऑफ मशीनरी, कि हम जब रेगुलर यूज कर रहे हैं मशीनरी का तो उसमें छोटी मोटी टूट फूट हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज सम कॉस्ट. ओके, उसको ठीक करने में जो कॉस्ट आती है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. एंड प्रोड्यूसर इज यूजिंग टेक्नोलॉजी बट दैट इज आउटडेटेड, कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है मार्केट में तो इट मीन्स प्रोड्यूसर हैव टू चेंज दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल, as earlier the time was of rubber shoes, ki people more demand for the so there was more demand of rubber shoes. Okay, but with the change in time, there was change in the technology and the demand of the people shift from rubber shoes to, we can say, leather और we can say cloth shoes. Okay, so people की जो डिमांड है वो चेंज हो जाती है, and because of that the producer have to replace the technology. Okay, and that is included in depreciation or we can say replacement cost. Okay, so it is due to regular use or outdated technology. Okay, so in this depreciation we include two type of obsolescence. Okay, first we have expected and second is unaccepted. First is unaccepted, second is unaccepted. So accepted obsolescence हमारे पास क्या हो जाएंगे कि मशीनरी के रेगुलर यूज से जो टूट फूट हो रही है एंड टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने की वजह से जो कॉस्ट आ रही है दैट इज accepted obsolescence. Okay, unaccepted obsolescence में हम क्या लेंगे? As are like there is natural calamities. Okay, due to natural calamities there is change in the demand pattern or we can say there is damage of machinery, damage of technology. Okay, damage of building plant. So that is the cost of the producer. So जो प्रोड्यूसर है उसको नए टेक्नोलॉजी लाने में, मशीनरी लाने में, या जो प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से तो उसको क्या है दोबारा से बनाना पड़ेगा. सो दैट कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस. ओके, सो इन obsolescence वी हैव टू टाइप ऑफ एक्सेप्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड में हमारा क्या आ जाएगा कि जो हमारा रूटीन जो we can say expenditure है, and in this we include natural calamities. Due to natural calamities whatever expenditure producer bear, so that is included in unexpected obsolescence. Okay, so this is about the gross investment and net investment. So net investment have more significance compared to gross investment. Why? Because net investment tell us about the net addition to the existing stock, capital stock, and if there is more net addition of capital stock, it means there is more opportunity of the employment, and more opportunity of the employment means more production in the economy and more growth of our economy and GDP. Okay, so students, read this from your book and watch the video. If you face any problem, any doubt, you are free to ask. Thank you.